Good evening to you all. Before we start today's class, may I request you all to please let me know in case if you have any doubts related to any of the topic or the points that we have discussed related to two topics that we try to understand, one on Friday and the other one yesterday. So if you have any query related to group discussion as well as negotiation process, you can first raise those doubts and then we are going to proceed ahead with today's topic. Yes, please. Any doubts that students you have related to the two concepts that we discussed? One is on Friday and the other one yesterday, related to group discussion and the negotiation process. Yes. So Ananta Kumari writes, no, ma'am. So should I consider that you don't have any doubt, Ananta? All right. What about the others? What about the other student? So Tanya also mentions no, ma'am. Okay. So I take it into consideration that my students have done fair study, they have done the revision in a proper way, and then we are going to proceed ahead with the new concept or the new topic related to today's class, that is uh, interview skills. As we all know that as a student of BBA, you are pursuing your management studies. And once when you finish your management course, probably you may be entering into your master's, that is MBA. And then after MBA, you will start either your own organization or you will try to associate with others as an employee. In both the ways, if you start your own organization or when you are willing to join somebody else's organization, you will be finding this word interview very commonly used by either you or the other members of the organization. Why? Because as a company, as an organization, you have to exchange your thoughts. Yesterday, when we were talking about negotiation skills, on Friday, when we discussed about group discussion, in both the days, this word was very common. Whenever we negotiate, we have to exchange our opinion with others. So it is very important for us to identify what are those common views that we are having between us. And that is possible only when we conduct the interview. Similarly, during the group discussion, it was very clearly detailed that the employer, whosoever is willing to hire the candidates, they may have to interview lot many people in order to overcome that challenge of time, resources, and also to identify who the right candidate is based on the eligibility criteria. So what do? They conduct the group discussion and try to eliminate lot many ineligible candidates, and by selecting only the few, the one who gets selected, they enter into this process which is called as interview. So as the word is denoted from Latin and Middle French word interview, which means to see or to see each other. Please understand, it is not question and answer session. It's the session which is organized wherein there are two different individuals, sometimes group of people having an interaction with one to identify what are the thoughts and processes that are running in the mind of the interviewee, whether they can mingle up well, can they work together in order to fulfill the requirement of the organization or not. Please keep this in your mind that meeting a person itself is called as interview. If you are meeting anyone for the first time, what is it do? You ask the person his or her name, try to find out what his interests and hobbies are, what are the places where he had visited, or what are the things that he likes to do or she likes to do. What are you doing? During the meeting, you are interacting with the other person to know more about that particular person. Based on the time, based on your experience, based on the
kind of knowledge you have. You ask questions which generally is answered by the other person. The reply that you are getting for your opinion and for your view, and based on that, when you think what kind of person the other person is, that is what interview is. हमेशा याद रखना है इंटरव्यू में क्वेश्चन और आंसर्स, एक व्यक्ति क्वेश्चंस पूछेगा और दूसरा व्यक्ति आंसर देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इंटरव्यूई होकर भी कई बार आप इंटरव्यूअर बन सकते हैं। आप एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां पर सामने वाला जो आज अभी तक इंटरव्यू कर रहा था एज एन इंटरव्यूअर, अब वो बन जाएगा इंटरव्यूअर जब वो आपके क्वेश्चंस को जवाब दे रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, अलग अलग तरह के इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं based on the requirement of the organization, based on the setting, based on the need of the people. So as there are different philosophers who had given wonderful statement, this is the one which is my favorite, given by Thiel and Bovey, wherein they say that an interview is a planned conversation with two or more people with a specific purpose. Now, हम जब कॉन्वर्जेशन करते हैं, हम जब इन जनरल गॉसिप या इंटरेक्शन करते हैं, हमारा कॉन्वर्जेशन कैसा हो जाता है? अनप्लान्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन इंटरव्यू कहते ही इंटरव्यूअर पहले से ही प्लान कर आएगा कि मैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगा इंटरव्यू से, और इंटरव्यूअर भी पहले से ही सोच कर आता है, एक अनुमान लगा लेता है कि किस तरह के क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे और उसे उन क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना है। So please understand, an interview is a planned conversation with two or more people with a specific purpose. This is very important. Purpose उन दोनों के बीच में common है, लेकिन जब हम आम तौर पर बातें करते हैं, हमारा purpose सेम हो भी सकता है, नहीं भी। हमारी need और requirement सेम हो भी सकती हैं या नहीं भी। So please understand, when we discuss about interview, there are the different types of interview, and let us understand about all these different types of interview in detail. The first one is personal interview. Whenever you are meeting with a person, having that face-to-face interaction or telephonic round of interaction or video conferencing with only one single individual to know more about that particular person, this is called as personal interview. जनरली इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अधिकतर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा, आपके अपने पर्सनल चॉइसेस के बेस पर होगा कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने कहाँ से पढ़ाई किया, आपका क्या चीज अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, more about you and your personality. Now, exit interviews are conducted at the time of a person when he or she is either retiring or resigning. जब भी कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई सालों तक काम कर लेता है और फिर जब वो रिटायर होता है, रिटायरमेंट से पहले उसकी एग्जिट इंटरव्यू करवाई जाती है। एग्जिट इंटरव्यू क्यों करवाई जाती है? उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी तो नहीं है, क्या वहां पर सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं, उन लोगों का क्या ओपिनियन है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इन चीजों के बारे में गहराई से जाना जा सकता है थ्रू एग्जिट इंटरव्यू। Then comes evaluation interview. Now the name itself says it is to evaluate someone. Evaluate का मतलब क्या होता है? ये जांचना कि वो व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है या बैठा है, क्या वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है या नहीं। तो ऑब्जेक्टिव जनरली आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने के लिए होता है। अगर किसी इंटरव्यू में आप बैठे हैं, अगर आपसे पूछा गया व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वो क्या कर रहे हैं? वो आपकी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बताइए। प्लीज अंडरस्टैंड, परसुएसिव इंटरव्यूज आर दोज वेयर पीपल आर ट्राइंग टू एग्जिबिट योर स्किल्स विच आर लेटेंट, जो दिख नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्स के बारे में किसी पर्सन से पूछना, अगर मैं पूछूं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर यू अ गुड सेल्समैन और अ बैड सेल्स पर्सन, you may not be able to answer it. लेकिन अगर मैं कहूं कि come on, take this pen and sell it to me, definitely with this demonstration I will come to know whether you are a good salesperson or you need certain improvement within you. So such kind of interviews are called as persuasive. इसमें लोगों को persuade करना होता है, motivate करना होता है, encourage करना होता है, ताकि आप उनके हिसाब से काम कर सके। Constructive interviews where based on your opinion
एक क्वेश्चन के बाद आपके ही दिए हुए आंसर से दूसरा क्वेश्चन निकालना और फिर उसके बेसिस पर जब आप आंसर देते हैं उसी के बेसिस पर फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करना। तो इस तरह के इंटरव्यू को कंस्ट्रक्टिव इंटरव्यू कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डिस्कस्ड विथ समवन दैट यू हैव enrolled yourself in one of the Coursera program. So after your speech, after the end of your answer, the person may ask you what kind of program was it, who was running it, where and for how long did you participate in that program. आपने जब ये पूरा डिटेल दे दिया फिर उसके क्वेश्चन, फिर उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन बनेगा, डिड यू रियली लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्सेरा प्रोग्राम। तो ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से रिलेटेड है जो कि कोर्सेरा है, जो जहां से कहां से पता चला इंटरव्यूअर को, आपके दिए हुए आंसर से। प्लीज ये याद रखिए, ये सारे वो होते हैं जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। अनस्ट्रक्चर्ड वो है मुझे जो पूछना है वो मैंने पहले से ही प्लान कर रखा है, चाहे सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में जाने या ना जाने, मैं उसे ये सारे क्वेश्चंस कर कर ही रहूंगा। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, चाहे बीबीए का स्टूडेंट हो, बीसीए का स्टूडेंट हो, या बीकॉम का स्टूडेंट हो, या बीएमसी का स्टूडेंट हो, अगर उसने एक इंटरव्यू प्रोसेस में अपीयर होने के बारे में सोचा है और वो कंपनी सेल्स करवाती है, वो ये नहीं देखेगा कि बीसीए का स्टूडेंट कभी सेल्स के बारे में पढ़ा है या नहीं, बीएमसी के स्टूडेंट ने सेल्स के बारे में पढ़ा है या नहीं, या बीकॉम के स्टूडेंट ने सेल्स के बारे में पढ़ा है या नहीं, या बीबीए के स्टूडेंट्स ने सेल्स के बारे में पढ़ा, तो मुझे उससे ही ये क्वेश्चन करना है। What he or she is going to do, they will ask you all the questions that they believe they are very important as per their requirement. They don't follow any strict rules and procedures. Keep this in your mind. This goes in the free flow. और व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले व्यक्ति को अगर किसी से कुछ पूछा गया, ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति से भी उसी तरह के चीजों को पूछे। काउंसलिंग इंटरव्यूज, जैसे आप सब जब एडमिशन के लिए आए थे आईएसएम में, आप लोगों ने कई बार एडमिशन काउंसलर सबसे बात किया होगा, और आपकी जब बात होती है तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपने क्या कंप्लीट किया था 11th और 12th में। तो ये जो इंटरव्यू प्रोसेस है इसे काउंसलिंग इंटरव्यू कहा गया है। Disciplinary interviews are related to those who do not follow the rules and regulations which are related to discipline, who violate the rules and regulation, and further the actions and steps are taken against them. All right. So moving ahead, these are again very, very important kind of interviews. Stress interviews, they are generally done in order to generate stress. I repeat, are used by the interviewer to identify, can you really work in stress? So what do? Sometimes even when you are giving the right answers, they'll say, no, you are wrong. You have to really check your answers. तो अगर आप उनके बातों में पढ़कर आपने अपने आंसर पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि सर मुझे नहीं पता मेरा आंसर सही है या गलत, या आपने ये कहा कि सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब आप में पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, आप कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से पिक कर लेते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, स्ट्रेस इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द स्किल सेट ऑफ द इंडिविजुअल। पब्लिक इंटरव्यूज, आज जैसे आपने टीवी में देखा होगा कई बार, कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, गेम हो जाने के बाद उनसे कई सारे लोग इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं, तो ये सारे पब्लिक इंटरव्यू हैं। इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल इंटरव्यूज, एज आई सेड, हमारी बातचीत भी जो हम किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं, हम जब उनसे उनके बारे में पूछते हैं, this flows in a flow. That flow is called as either informal or conversational interview. Please remember, there are certain guidelines that you have to follow. What are those guidelines that we should follow? The questions that are asked, they are generally open-ended questions. What do we understand by open-ended and closed-ended question? I want you all to take note of this. क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होता है जहां पर
आप या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर यू अटेंडिंग बिजनेस इंग्लिश क्लासेस? जो रेगुलर अटेंड कर रहा है वो यस बोलेगा, यस आई एम अटेंडिंग बिजनेस इंग्लिश क्लासेस। और जो नहीं अटेंड कर रहा है वो बोलेगा, नो आई एम नॉट अटेंडिंग बिजनेस इंग्लिश क्लासेस। सो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर दोज where you will have limitation of the answer either to yes or no. But when we talk about open-ended question, open-ended question gives you the platform to express your viewpoint in an elaborative way. For example, what do you think India should do in order to win more number of medals in Olympics? Now, the answer will not be yes or no. There can be a lengthy discussion on this particular topic. So such kind of questions are called as open-ended question. Please remember, interviewer आपसे generally open-ended questions पूछेगा, ना कि close-ended. Now, the next step that we should know about interview process is related to career preparedness. The most important thing that we all should understand is building our resume. What is the difference between resume and CV? CVs are generally written by academician. जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो रिसर्च में है, जिनका पूरा का पूरा टाइम एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में जाता है, वो लोग करिकुलम वाइटे लिखते हैं। उनके करिकुलम वाइटे में एजुकेशन के साथ साथ उनके रिसर्च पेपर, उनके आर्टिकल्स के बारे में, उनके बुक्स के बारे में, उनके वेबिनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में एट लेंथ में इंफॉर्मेशन होता है। A person who is willing to work in an organization, जो व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर रहना चाह रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अप्लाई कर रहा है अदर देन द एकेडमिक्स, वो वहां पर अपना रेज्यूमे सबमिट करता है। A resume is generally of a page or two, not more than that. Resume is actually your self advertisement. This talks about your skills, experiences, achievements which can match with the job opening. जिससे आप कह सकते हैं कि सर आपके यहाँ पर ये जॉब की ओपनिंग है, मैंने पहले से ही ये काम कर रखा है, तो आप मुझे चूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। कैसे मिला मेरा एक्सपीरियंस? मे बी इंटर्नशिप के थ्रू, मे बी लाइफ प्रोजेक्ट्स के थ्रू। ये हमेशा याद रखिए, आपको ना 3 फेजेस पर काम करना है अपने रिज्यूमे में। जब भी आप किसी लाइफ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं या लाइफ प्रोजेक्ट खत्म कर लेते हैं तो लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में जरूर अपडेट कीजिए अपने रिज्यूमे। रेज्यूमे में आपका इंटर्नशिप से पहले का रेज्यूमे अलग होगा, इंटर्नशिप के बाद का रेज्यूमे इंटर्नशिप को इंक्लूड करते हुए होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कहाँ से आपने इंटर्नशिप किया, किस टॉपिक का विषय था जो आपने चूज किया इंटर्नशिप के दौरान, और उसके ऊपर आपने क्या सीखा, क्या आपके लर्निंग एक्सपेक्टेशन रहा है। इंटरव्यू में रेज्यूमे बना लेने के बाद हमेशा याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जहां पर आपका नॉलेज के साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों लिया जाता है? हमें याद रखना है कि जब हम किसी हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रॉफिट को अर्न करते हुए आगे बढ़ रहा है, वो हमेशा चाहता है कि ऐसे लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सके जो उनके परसेप्शंस को प्रॉपर्ली समझ सके, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से काम कर सके, ऐसे हो जो सही जजमेंट ले सके, प्रॉपर रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग के साथ। इसीलिए कंपनी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाता है, चेक करने के लिए कि आपका लॉजिक, रीजनिंग, वर्बल जो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा कैसा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इन मेनी अ टाइम, particularly when you are applying for any of the government job, the first thing that you are going to appear would be for an aptitude test, and this is very very important. You cannot say that I will not be sitting in an aptitude test and will directly go for an interview process. That's not possible. Then comes the next, that is mock interview. ये बहुत ही important है। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझते हैं मॉक इंटरव्यूज
सही नहीं होता, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज लेने से टाइम वेस्ट होता है। मॉक इंटरव्यू होता क्या है? Mock interviews are those interviews which are taken by the interviewee or interviewer to rehearse themselves. मान लेते हैं प्रेरणा ने नीरू का इंटरव्यू आज के लिए फिक्स किया है। प्रेरणा पहले से ही डिजाइन और डिस्कस कर लेगी कि उसे किस तरह के क्वेश्चंस नीरू से पूछना चाहिए, और नीरू भी प्रेरणा के सामने बैठने से पहले वो भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करेगी कि अगर प्रेरणा ने उससे कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछा तो उसे वो कैसे जवाब देने वाले। इससे क्या होता है, मेरे स्ट्रेंथ मुझे पता चल जाएंगे, मेरे वीकनेसेस मुझे पता चल जाएंगे। अगर मेरा ऐसा कोई वीकनेस है जिसको मैं एग्जिबिट नहीं करना चाह रही, तो मेरा आंसर में हमेशा ये ध्यान रहेगा कि मैं उस तरह के वीकनेस को या उस तरह के वीक पॉइंट्स को इंटरव्यूअर के सामने बोलते समय ना लाऊं। Then comes the third step, that is you start presenting yourself. आप इंटरव्यू के दिन इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं बात करने के लिए। इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाहता है? आपके अपने बारे में। तो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, प्लीज ये याद रखिए, आप अपने लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स को मत भूलिए। कितने स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पर सारे के सारे वेबिनार्स को अटेंड कर रहा है? अभी जो हमारे कॉलेज में चल रहा है एट इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पटना फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टिल द मंथ ऑफ जुलाई, कितने सारे स्टूडेंट्स ने किन किन वेबिनार्स में पार्टिसिपेट किया? क्या आप सब ने एक जर्नल, एक लॉग बना लिया है कि किस वेबिनार का क्या टॉपिक था, कौन से स्पीकर थे और उससे क्या सीखने को मिला है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ये करना भूल जाते हैं, और इसीलिए जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि ठीक है आप अपने कॉलेज में हुए 5 ऐसे वेबिनार्स के बारे में बताइए जिसके स्पीकर ने आपको बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन शेयर किया, वो कहाँ से थे और उनका नाम क्या है, हम नहीं बोल पाते। तब इंटरव्यूअर को क्या लगता है? इंटरव्यूअर को लगेगा कि ये झूठ मूठ का इंफॉर्मेशन मुझसे शेयर कर रहा है। गलती आपकी भी नहीं है, ना इंटरव्यूअर की। गलती कहाँ है? हमारी अपनी प्रिपेयर्डनेस में कमी है। हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम? वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ कैन वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दैट पर्टिकुलर बिग डे। बिग डे 2 साल के बाद आएगा, लेकिन क्या अभी से हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? 100% yes. What is it that you have to do? You have to note down all the important activities into which you are enrolled. जैसे अगर आपने कोर्स एरा, उडेमी, अनअकैडमी, इन सारे पोर्टल्स पर या हब स्पॉट से कहीं पर भी आपने कोई फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स किया है या गूगल के थ्रू गूगल का फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स किया, तो इन सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में एक जर्नल पर, एक लॉग पर, रजिस्टर पर लिखना शुरू करेंगे। मेंटेन कर लीजिए कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इस सर्टिफिकेशन कोर्स को कंप्लीट किया, उससे मुझे ये फायदा हुआ, सीखने को ये मिला। उतना ही नहीं, आपने अगर बहुत सारे वेबिनार्स को अटेंड किया है, सारे वेबिनार्स आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, तो आप वेबिनार्स के थ्रू क्या क्या सीखते हैं उसे जरूर बता सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रिपेयर आवर एलिवेटर स्पीच, दैट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन। आमतौर पर एक स्टूडेंट जब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देता है तो वो कैसे होता है? लेट अस हियर इट फ्रॉम फ्यू ऑफ यू। केशव, क्या आप अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं बेटा अभी? कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? प्लीज गो ऑन। My name is Keshav Kumar Jha. I am from Darbhanga. I am pursuing BBA from International School of Management. I am in second semester. I am pursuing BBA. Yes. Right. That is it from your side, Keshav. Anything else that you would like to add on? No, ma'am. Thank you, Keshav. May I request now Rajan to quickly introduce himself? Yes, Rajan?
Yes, ma'am. Quickly introduce yourself, dear. Hello, I everyone. My name is Anand Kumar from Patna. That is it, Rajan. You don't have anything to tell about yourself except the name and the place where you belong to. Okay. Can I hear something from Samir Ahmed? Mohammed Samir Ahmed. Yes, beta. Can you quickly introduce yourself, Samir? My name is Mohammed Samir Ahmad. I am from Patna. I'm studying in BBA in International School of Management. I live in Patna, Khogol. That's it, ma'am. Thank you, Samir. Thanks a lot, dear, for your wonderful introduction. There is a last candidate, and I would like to go to uh, Shaurya Kumar. Shaurya, can you quickly introduce yourself, please? Yes, ma'am. Hello everyone. Please, I am dear. Sorry Kumar and I am from ISM Patna and I am pursuing BBA from ISM because I want to be a manager and I think ISM will be perfect for me. Thank you. Okay. Thank you, Shaurya. Thanks for your wonderful introduction. Uh, as I heard only the boys, may I now give an opportunity to Miss Sumaya RC. Sumaya, can you quickly introduce yourself, dear? Yes, please. Good afternoon, evening, ma'am. Good afternoon, evening. My name is Neeru. I am basically from Pusa Samastipur. Yeah. Now I am recently in Patna and I am studying BBA from Patna ISM. Thank you, ma'am. Okay. अब आप सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो 18 ईयर ओल्ड है, मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड. अगर आपसे किसी ने आपका खुद का इंट्रोडक्शन पूछा है, वहां पर आपने नाम बताया जो कि आपके माता पिता के द्वारा आपको दिया गया है, कॉलेज का नाम बताया जहां पर आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ वहां पर आप 3 साल की पढ़ाई के लिए, कोर्स के लिए आए हैं. इसके अलावा आप कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं ये बता रहे हैं. इन सारे चीजों से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलने वाला? क्या सच में ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट मिल सकता है इन चीजों से? सर्टेनली नॉट. अगर ये आपने अपना इंट्रोडक्शन किसी कंपनी के इंटरव्यूअर को दिया, तो वो हमेशा सोचेगा कि आप में और एक क्लास 1 के कैंडिडेट में कोई फर्क नहीं है. How to bridge this and how to bring that newness in your introduction? For that, you should understand. मैंने अपने बीबीए के कोर्स में अभी तक क्या-क्या पढ़ा है. पढ़ाई को कैसे कनेक्ट करेंगे? पढ़ाई आपने क्यों चूज किया? बहुत सारे कोर्सेस हैं. इन बहुत सारे कोर्सेस में आपने बीटेक ऑप्ट नहीं किया, आपने बीई ऑप्ट नहीं किया, आपने बीए ऑप्ट नहीं किया, आपने बीएमसी नहीं ऑप्ट किया, आपने बीएससी भी ऑप्ट नहीं किया, आपने यहाँ तक कि बीकॉम ऑप्ट नहीं किया, आपने बीबीए ही चूज किया. उसके चूज करने के पीछे क्या रीजन है? मैनेजमेंट का मतलब आप क्या समझते हैं? और इसके अलावा आपके अंदर ऐसे कौन सी क्वालिटीज हैं जिसके कारण से आप स्पेशल बनते हैं, जिसके कारण से किसी भी कंपनी को आपको चूज करने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए. जब तक आप अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपरली डिजाइन और प्रिपेयर नहीं करोगे, तब तक कंपनीज सैटिस्फाइड नहीं होने वाली. प्लीज आइडेंटिफाई ड्यूरिंग योर एलिवेटर स्पीच. यू मस्ट ऐड. आप अगर नोट कर सकते हो तो प्लीज नोट कर लो. मैनेजमेंट क्या समझाता है और आपको एक अच्छा मैनेजर कैसे सोचते हो कि आप बन पाओगे, आप अपने आप को एक बहुत अच्छा मैनेजर कैसे बना पाओगे, उसके लिए आपके कौन कौन सी क्वालिटीज आप में है. हाउ कैन यू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. इसके साथ साथ आपका
कहाँ पर आपने सर्टिफिकेट कोर्सेज किया, उससे आपको सीखने का क्या मिला, और उस सीख से आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। उतना ही नहीं, अगर कॉलेज में कोई इवेंट हुआ है तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया या नहीं। आप सब बोलोगे मैम इससे क्या बेनिफिट होने वाला। इससे आपके बहुत सारे स्किल्स के बारे में पता चलता है। अगर मैं बोलूं आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, लेकिन जब मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो बोलते समय बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रहा है, हिचकिचाहट हो रही है, तब तो मैंने अपने बात को खुद ही काट दिया। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि सर मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया जो कि मेरे कॉलेज में ऑन रेगुलर बेसिस होते आया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार दिवस में सेलिब्रेशन हुआ था तब मैंने परफॉर्म किया, मैंने एंकर किया था, होस्टिंग किया था इवेंट को। तो इसका मतलब आप पीपल फ्रेंडली पर्सन है, आपको पता है कि पीपल्स को कैसे मैनेज करना है, आपको स्टेज पर जाने से डर नहीं लगता। So what all can you use in order to exhibit your skills, talent, knowledge and attitude that you have to include in your elevator speech, that is your self introduction. अगर आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन पर काम कर लिया तो कभी भी ये याद रखना, कोई भी कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो जनरली जो डाउट आता है स्टूडेंट्स का, दैट व्हाट शुड आई इंक्लूड इन माय सेल्फ इंट्रोडक्शन, लेट अस proceed ahead with that to make you all understand. Please give your name with a very brief, like where you are born and brought up, educational background, from where did you do your school, your graduation, the certification courses that you have involved into, enrolled with, and any honors and degrees or award. What about the work experience? I don't know how many of you are picking up the internship, लेकिन इंटर्न्स के तौर पर अगर आप काम कर लेते हैं तो आपका रेज्यूमे ये बताएगा जरूर कि आपके पास ऑफ कोर्स एज एन वर्क एक्सपीरियंस कंपनी का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एज एन इंटर्न आप जानते हैं कि कंपनी के क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं, टारगेट्स क्या होता है और टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाए। So please enroll yourself into internship because that is going to help you a lot to speak about yourself. Reasons for pursuing that particular course that you are involved or enrolled with, that is why BBA. And also think about the information wherein you can exhibit about your short-term and long-term goals. Don't forget the short-term goals are very, very short and long-term means not more than 6 months or a year. And please highlight about your specific qualities, like what are you expert with. So here, if you see, I gave you a small example, all right? I don't know how many of you have really read this, but if you can really prepare your elevator speech, and if you can rehearse it maybe 5, 6, 7 times, you can automatically speak with great confidence and you can let people know about your own self. In every individual, there is something or the other different from the other candidate. You all are unique. Rajan is not like Samir. Samir can't be like Mir Hamza. Mir Hamza cannot be like Himanshu. Himanshu cannot be like Ritik. So there are different individuals, and all these different individuals are unique. Every person has their own plus and minuses. What we have to do is we have to identify what is our USP, that is unique selling proposition. मुझे दूसरों से क्या डिफरेंट, मेरे अंदर ऐसी क्या खासियत है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो मुझे दूसरों से अलग रखता है. So identify the qualities. You can talk about your presentation skill, you can talk about your communication skills, you can talk about the people management, you can talk about your interest and hobbies, which differentiates you from the other. Please understand the resume that you're going to draft. It always help you to make yourself different from others. So therefore, work out on your resume. And at the same time, when you're writing the cover letter, it will display your email writing etiquette. While attending the interview process, it is going to exhibit your interviewing as well as negotiating skills. So whenever you get an opportunity to sit in front of other and discuss about your own skills and set of ideas that you are having in your mind,
don't hesitate to express it. Build up the connection. I don't know how many of you are using LinkedIn, though this was given as a task, but very few I see you connected with each other on LinkedIn. Please understand, these social media sites like LinkedIn or Facebook or even the other sites like Insta can be a place where you can be connected with different people. Twitter can be one, Tumblr can be the other one. So please do get connect with your friends, with your professors, with your colleagues, with alumni, with the people who are there in the different organization, and then try to find out what are they doing, and then accordingly you can develop within yourself those kind of qualities generally which are appreciated by the organization, so that you can get better opportunity to get hired. Always understand, जब भी हम इंटरव्यूज कहते हैं जरूरी नहीं है कि हर कम्युनिकेशन फेस टू फेस हो, कई बार ये टेलीफोनिक भी हो सकता है, कई बार ये आपको रिटन के तौर पर, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट रिटन टेस्ट होता है, उसके बेसिस पर भी लिया जा सकता है। पहला इंप्रेशन जो क्रिएट होता है वो आपके रेज्यूमे के थ्रू होता है, नॉट इन योर प्रेजेंस। अगर आपके प्रेजेंस से की बात की जाए तो आपका ड्रेसिंग सेंस, जैसे आपका बिहेवियर है, आप कैसे चलते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इन चीजों के को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू आपका पहला इंप्रेशन डेलीगेट करता है। There are certain essentials that we have to keep in our mind. Please remember, body language matters a lot. The dress that you are wearing matters a lot. Don't have that desperate approach. Sir, मुझे ये job बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे ये job चाहिए ही चाहिए. You cannot be a beggar. You should become a fighter in the interview process so that the person should understand that yes, you are eligible and so you deserve to get the job. Know what to speak, when not to speak, how much to speak, how to get that good words and sentences out of your mouth which can definitely connect with the interviewer. Don't babble. मुंह से फालतू की बातें नहीं आनी चाहिए, गलत गलत स्टेटमेंट्स नहीं आना चाहिए, irrelevant points भी बाहर unnecessarily के नहीं आना चाहिए। जब भी आपको इंटरव्यूअर कुछ कह रहा है, try to listen to him very attentively. प्रोफेशनल लुक में रहिए, हमेशा याद रखिए कि चीजों को लेकर कंफ्यूज मत होइए। कंट्रोल ऑन योर लैंग्वेज, कंट्रोल ऑन योर थॉट प्रोसेस, प्रिपेयर योर आंसर्स वेरी वेल। ऑल्सो नो व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस एंड देन यू से नो। अगर आपने सच में बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है अपना इंटरव्यू, आपने कंपनी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी ले ली है, you will see you will definitely have certain questions to ask with the interview. I'm going to give a halt right here. We are going to discuss about the job application and its preparation and planning in the next class. In case if you have any doubts related to whatever we have discussed right now, you can definitely let me know. I am very happy to clear your doubts. If you have any, please. Ananta, USP means unique selling proposition. Ananta, how can you say that you are different from Amrita, Prerna, Shivani, Aradhana, Megha? कंपनी आपको ही क्यों चूज करे? समझ में आया बेटा? आपके अंदर कुछ एक खासियत होती है, आप अपनी खासियत को कैसे बताओगे? आप एक गुड मैनेजर हो, आप कैसे प्रूव करोगे कि आप गुड मैनेजर हो? If you are a leader, how will you prove that you are a leader? If you are a team player, how can you prove that you are a team player? If you are people's person, how can you prove that you are people's person and you respect everyone? So for that, you should have a story to tell. All right. As I said, conversation happens, Tanya, between you and your friend. आप कभी डिसाइड नहीं करते हैं, आप फोन कर कर, ईमेल कर कर, आप प्लान नहीं करते हैं कि चलो इस जगह पर इतने से इतने बजे तक ही कॉन्वर्सेशन करें, राइट? कॉन्वर्सेशन अनप्लान्ड अनस्ट्रक्चर्ड है, जबकि इंटरव्यू वेरी वेल प्लान्ड और स्ट्रक्चर होता है। पर्सुएसिव का मतलब मेघा, जब लोग आपसे ऐसे क्वेश्चंस करें जहां पर आप बोल पड़ो, आपका अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको आप आगे बढ़ा सको। इंटरव्यू गाइडलाइंस ऐसे एज सच कोई नहीं होता। हाँ, 4 चीजें आपको याद रखना होता है। पहला, आपको अपना रिज्यूमे प्रॉपर्ली बिल्डअप करना है। दूसरा, आपका इंटरव्यू रिलेटेड प्रिपरेशन अच्छा से होना चाहिए। तीसरा, कंपनी रिलेटेड प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए।
और चौथा, आपको मैनेज करना चाहिए अपने बॉडी लैंग्वेज को. If you cannot manage your body language, it will be very difficult for you to sit into the interview process. Megha, if I ask about this stress, please understand, stress होता है जब लोग मेरी बात नहीं सुनते या आपकी बात लोग नहीं सुनेंगे. कंपनी स्ट्रेस इंटरव्यूज इसलिए करवाता है कि कई बार कई लोग बोलते हैं कि आई कैन मैनेज स्ट्रेस, लेकिन उनसे अगर 4 क्वेश्चंस पूछ ले तो वो इमीडिएटली गुस्से में आ जाते हैं. अगर आपसे कोई ऐसी बात कर दे अब जो आपको पसंद नहीं है, आप इमीडिएटली लड़ने झगड़ने के लिए बैठ जाओगे. दिस शोज दैट यू डू नॉट हैंडल स्ट्रेस. Stress interviews are to check whether you are people's person or not. Can you tolerate? Can you really manage the pressure of work or not? All right. Of course, we can have a practical session of the interview if you people are ready. But for that, I need certain participants who can volunteer and who can prepare on certain topics, based on which I can ask the question. Otherwise, it will be very difficult for me to conduct the interview. Interview का पहला question, introduce yourself. Why BBA? What are your strengths and weaknesses? And what do you want to become in future? These are the 4 questions. If you are really willing to get a practical exposure, you have to prepare yourself with. All right. Let me repeat the question. Introduce yourself. Why BBA? What are your strengths and weaknesses? And where do you see yourself after 3 years of time? Where do you see yourself after 3 years of time? If you can really work out on these 4 questions, and if you're ready, I can give you a demo, and then we will discuss about the job application and how and what steps that we have to follow in order to present a job application wherein rejection can be eliminated and there can be 100% guaranteed for the selection. All right. So here I end up today's class. I think you do not have any further questions. If you have, I'm very happy to take up few more questions. So I see no answers, no responses in the chat box. With this, I believe that there are no more doubts. Thank you very much for attending today's class. Take care.